Good evening and warm welcome to everybody to a very special edition of our sector-specific webinar. I'm Shrikant Chauhan from Kotak Securities. Joining me today is our speaker for the day, Mr. Jatin Damania, Vice President with PCG Research of Kotak Securities. He has around 15 years of experience in equity market and covers multiple sectors, including chemicals. Jatin has been with Kotak Securities since 2014 and looks after metals and minings, chemicals, and mid-cap space. He is an MBA from Mumbai University. Over the 15 years, he has established good relationships with large corporate clients through his expertise. Chemicals is an indispensable sector for all countries. It is used in multiple industries. In fact, without chemicals, we cannot expect the existence of industries like FMCG, paints, refrigerants, plastics, perfumes, agrochemicals, and lubricants. A few years back, research on the given sector was not easily available, but now considering the scalability and visibility, many research firms have started working on it in a big way. Mr. Jatin has strong hold on that sector and monitors the sectors very closely. So Jatin, over to you. Thank you, Shrikant. So to start with, let me first start with the screen sharing. So here I'll give you the brief overview about the specialty chemicals and why we are bullish on the specialty chemicals despite the sector has outperformed in last 2 years. Now the key thing the sector has outperformed is because the longevity of earnings and re-rating because of the import substitution. The space has grown substantially higher, over 25% in last 5 years, and probably growth will continue to remain around 30%. So let's first understand the macro factor, the reason behind why we choose a particular company, and what are the investment arguments that we are still bullish on the chemical space. So अगर हम स्टार्ट करते हैं तो लेट्स हैव अ मैक्रो व्यू. बड़ा पिक्चर देखें तो अगर ग्लोबल केमिकल साइकिल हम देखते हैं, सो दैट साइकिल इन 2014 वाज लार्जली सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटर था कमोडिटी केमिकल्स, फिर आता है स्पेशलिटी केमिकल्स एंड देन अदर्स, व्हिच वाज ऑलमोस्ट अराउंड $4,000 billion. And this particular space is as a whole is growing almost at 6% CAGR, compounded annual growth rate जिसे हम बोलते हैं. और by end of 25 which is calendar year, हम इसे एक्सपेक्ट करते हैं कि 7,000 CAGR तक जा सकता है, which means the pie of specialty chemicals is likely to increase at a faster rate, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट हमने देखा हुआ है बाकी जो कंपनी कर रही है has increased at a multifold rate in a specialty chemicals as compared to commodity chemicals. फिर हम देखते हैं कि सबसे बड़ा प्लेयर केमिकल्स में कौन है, कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा सप्लाई करती है और प्रोड्यूस करती है. तो जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस और सप्लाई करने वाली कंट्री है वो है चाइना, उसके बाद है यूएस 13%, और जहां तक इंडिया की बात हम करते हैं दैट अकाउंट ओनली फॉर 4% ऑफ द मार्केट शेयर. अगर ये 4% मार्केट शेयर है अभी इन 2018 to 19, तो अगर कितना जा सकता है आने वाले 10 सालों में. तो ये हमारा वर्किंग है कि अगर इंडियन इंडस्ट्री अगर 15% ग्रोथ से अगर बढ़ती है तो एट द एंड ऑफ 35 we will be around 8.3% of the global market share, which means कि global market size जो 2021 में $4,740 billion थी वो हो जाएगी 9,385, मतलब $9,385 billion. और उसी कंपैरिजन में अगर हम इंडियन साइज देखते हैं तो 346 lakhs billion rupees will go up to almost 1 trillion, which will be 8.3% of the global market size by end of 35, which I'm talking about this picture. So currently in 21 we are at 3.5%. जो हमारा एस्टिमेट्स है, अंदाजा है कि by end of this calendar year in 22 it has gone to 3.7% और 23 में
30 बिप्स की और बढ़ोतरी आएगी, बट अगर 35 तक हम देखें तो 8.3%। तो अगर इंडस्ट्री इतनी अच्छी तरह से ग्रो हो रही है तो कौन सी कंपनी पे हमें फोकस करना चाहिए? अगर केमिकल्स में आप देखो तो करीबन करीब इन फ्यू हंड्रेड टाइप्स ऑफ कंपनीज है जो एक छोटी सी कमोडिटी या बल्क केमिकल्स बनाती है या स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है। हम सब पे हमें व्यू रखना तो डिफिकल्ट है, बट हाँ, हर एक कंपनी का कोई ना कोई सक्सेस फैक्टर्स आता है that we monitor in selecting a particular company, and then only we come out with the research report. So to give a few examples, we benchmark certain key companies by identifying a key success factors, which is their promoters. कंपनीज की हम प्रोडक्ट कैपेबिलिटीज या R&D एक्टिविटीज देखते हैं, कौन से सेक्टर्स को कवर करते हैं, कितने कंपटीटर्स है, क्या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है या ग्लोबल या एक्सपोर्ट ड्रिवन मार्केट है, क्लाइंट कंसेंट्रेशन क्या है, क्या स्विच हो सकते हैं या डाउनस्ट्रीम प्रोडक्शन बढ़ सकती है, और रिस्क क्या है। तो यहाँ पे जैसे हम आरती की बात करते हैं तो डेफिनेटली वो टेक्नोक्रेट प्रमोटर्स है। उनकी प्रोडक्ट्स जो है विच इज बेस्ड ऑन बेंजीन एंड टोलिन चेन, विच इज मिक्स ऑफ कमोडिटी एंड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हम जिससे बोलते हैं जहाँ मार्जिन कमोडिटी से काफी अच्छे रहते हैं। दे हैव अ डाइवर्स व्यू ऑफ सेक्टर्स लाइक एग्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, पॉलीमर्स, पेंट्स एंड डाइज। कंपटीटर्स काफी बड़े हैं, डोमेस्टिक में भी अच्छी खासी कंपटीटर्स है, ग्लोबल्स भी है, बट क्लाइंट कंसेंट्रेशन आप देखोगे तो प्राइमरी बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई है। स्विचिंग टू लो टू मीडियम इंक्रीज फॉर डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स। कमोडिटीज में आप स्विच कर सकते हो बट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में नहीं। डेफिनेटली सबसे बड़ी जो रिस्क है केमिकल सेक्टर्स में इज रॉ मटेरियल्स, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द रॉ मटेरियल्स और काफी हद तक रॉ मटेरियल्स जो डिपेंडेंट है वो क्रूड एंड क्रूड डेरिवेटिव्स है। तो आगे चल के हम देखेंगे कि क्रूड एंड क्रूड डेरिवेटिव्स का सेक्टर्स पे क्या इम्पैक्ट है। जैसे क्रूड्स बढ़े हुआ है तो लोगों को लगता है कि केमिकल्स को बड़ी हिट आ सकती है, बट विल टेक दिस पॉइंट इन सम टाइम। सिमिलरली अतुल है, अतुल के भी काफी डाइवर्स प्रोडक्ट है जहाँ फार्मा को कैटर करते हैं, एग्रोकेमिकल्स। क्लीन साइंस promoters are basically actively involved in all aspects like products identification, research and development and client engagement. ये एक ऐसी कंपनी है जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं करती है, बट जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो एंड एप्लीकेशंस है उसमें लार्जली एक्सपर्टीज है। नवीन फ्लोरिन विच इज NFIL, which is largely placed in innovative space for pharma, agrochemicals, and company is now entering into a polymer which is an HPP. अगर नवीन फ्लोरिन की देखो तो एक्सपांशन में काफी टाइम लगता है बिकॉज जेस्टेशन पीरियड फॉर फार्मा सेक्टर्स काफी हाई है। और डेफिनेटली इट्स अ वन मैन शो बिकॉज मिस्टर वेलिंग, राधेश वेलिंग, who is the current MD of the business, is basically running the entire show. Similarly, PI, SRF, विनती के ये की है, और यही हम 7-8 कंपनी जो कवर करते हैं बिकॉज वी थिंक कि उनका जो प्रेजेंस है वो हमें लगता है कि अर्निंग्स काफी हद तक सस्टेनेबल है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और नई नई जो प्रोडक्ट केमिकल्स आ रहे हैं, नई वैल्यूएडेड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जो कैपेक्स हो रहा है और जो कंपनी R&D कर रही है, लॉन्जेविटी ऑफ अर्निंग्स, सस्टेनेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स हमें ये सब कंपनियों में दिख रही है। बट क्या ये सब कंपनीज खरीदनी चाहिए? क्रूड पे क्या इम्पैक्ट है वो भी हम आगे देखेंगे। तो जैसे मैंने बोला कि सेक्टर्स 1.5-2 साल में काफी स्ट्रॉन्ग चल चुका है, क्या आगे और चलेगा? हमें लगता है कि अगर जो कंपनीज की मैंने बात की आगे, आरती, अतुल, नवीन फ्लोरिन, SRF, क्लीन साइंस, PI, विनिति, ऑल दिस कंपनीज, ये सभी कंपनीज अपने आप में एक लीडर है। Everyone have managed to manage themselves to produce, either to support a import substitution या produce a value added product, moving from a normal bulk commodities जो low margin product है to a high commodities जिसे हमें downstream product बोलते हैं। इसीलिए हमें लग रहा है कि all these companies are better placed, काफी हद तक strong है करंट सिनेरियो में कि वो जो अपना जो क्रूड प्राइस इंक्रीज हुआ है वो कस्टमर्स को पास ऑन कर सकते हैं
ना बल्कि क्रूड प्राइस बट इंक्रीज इन पावर एंड फ्यूल कॉस्ट, increase in freight cost will be easily be able to pass on to the end users with the help of downstream products, वॉल्यूम लेड ग्रोथ जहां पे हम ऑपरेटिंग एफिशिएंसी की बात करते हैं, और इम्प्रूव कम्पिटिटिवनेस। अगर हम देख रहे हैं कि चाइना प्लस वन की स्ट्रेटेजी आ रही है, तो डेफिनेटली ऑल द डोमेस्टिक प्लेयर्स आर एबल टू इंक्रीज द वॉल्यूम, और कंपनीज की जो कैपेसिटी एक्सपांशन आ रही है वो इसीलिए आ रही है कि जो करंट कैपेसिटीज है ऑलरेडी ऑपरेटेड एट अ रेटेड लेवल, और कहीं ना कहीं नए इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन के लिए ऑल कंपनीज आर मूविंग टू अ डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स which will help them to not only strengthen their P&L but sustain the earnings for the longer term. फिर एक क्वेश्चन आता है कि इंडियन की केमिकल्स कंपनी एक्सपोर्ट करती है, यूरोप में कितना एक्सपोर्ट करती है, रशिया में कितना एक्सपोर्ट करती है, और जो हिसाब से रशिया यूक्रेन के क्राइसिस है, इन कंपनीज को क्या इम्पैक्ट है। तो अगर आप देखोगे जो कंपनीज हम कवर करते हैं उनका एक्सपोजर टू रशिया एंड यूक्रेन काफी कम है। हाँ, यूरोपियन कंट्रीज में है, बट रशिया यूक्रेन में काफी कम है, जो मैं आगे बताऊंगा कि कौन सी कंपनीज कितना एक्सपोर्ट करती है रशिया यूक्रेन, और टोटल यूरोप पे उनका एक्सपोजर कितना है। एंड राइजिंग फूड कमोडिटी प्राइसेस विच इज ऑल्सो वन ऑफ द की रिस्क टू द एंटायर आर्गुमेंट। ये सब एंगल से हमें लगता है कि स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज जो पास्ट में 1.5 साल में जो प्रीमियम ट्रेड हुआ है, जो 25 टाइम्स मल्टीपल जो 2.5-3 साल पहले चल रहा था, वो 45-50 टाइम्स हो गया। हमें लगता है कि ये मल्टीपल्स कंटिन्यू रहेंगे, और ये कंपनी स्पेशलिटी कंपनीज विल कंटिन्यू टू ट्रेड एट अ प्रीमियम एज कंपेयर टू अदर केमिकल्स कंपनीज, वेदर वो एग्रोकेमिकल्स हो या स्पेशलिटी केमिकल्स में काफी अच्छी ऐसी कंपनी है जहां मैनेजमेंट का फोकस नहीं है या कैपिटल डीएलोकेशन है, और जहां सस्टेनेंस जो जिसे बोलते हैं कि आगे कंपनी कौन रन करेगा, वहां पे भरोसा नहीं रहता इन्वेस्टर्स को। या तो लोग बोलते कि अभी केमिकल प्राइसेस अच्छे हो गए तो सभी कंपनीज चलेगी, बट वो प्राइसेस सस्टेन रहेंगे, क्या वो अर्निंग सस्टेनेबिलिटी होगी, उस पर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। इसलिए हम बल्क कमोडिटीज ज्यादा ना प्रीफर करके स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी प्रीफर करते हैं, जिसमें हमने नाम आगे देखे हैं, आरती इंडस्ट्रीज है, अतुल है, विनती है, एसआरएफ है, पीआई है। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं जो सबके माइंड में रहेगा कि इंक्रीजिंग कॉस्ट प्रेशर। इंडस्ट्री ना बल्कि स्पेशलिटी केमिकल्स, सभी कंपनी और सभी इंडस्ट्रीज को सबसे बड़ा जो अभी इम्पैक्ट आया हुआ है वो क्रूड के लिए हुआ है, जो करीबन करीब आप चार्ट में देखते हो अप्रैल 20 के करीब नियर अबाउट $20 पर बैरल था, वो दिसंबर 21 या जनवरी फरवरी के आसपास $120 हो गया, और अभी करीबन करीब $100 है। अगर सिक्वेंशियल अगर आप देखते हो तो करीबन करीब 17 से 20% का बढ़ोतरी हुई है। क्या इसका इम्पैक्ट केमिकल कंपनीज पे आएगा? जरूर आएगा, बट प्रॉफिटेबिलिटी पे हमें नहीं लगता कि इतना इम्पैक्ट आएगा, बिकॉज अगर हम लास्ट ये लेवल अगर हम देखें कि 2013-14 में भी हमको ये लेवल के क्रूड दिखाई में आए थे, जहाँ 120 डॉलर के बीच में क्रूड था, करीबन करीब अगस्त 2012 से लेके अगस्त 2014, 2 साल तक हमने इतने एलिवेटेड क्रूड प्राइस देखे थे, जिसमें अगर आप देखो केमिकल कंपनीज ने काफी हद तक जो डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट कंपनी जो वैल्यूएटेड कंपनी बनाती है, दे वर इजीली एबल टू पास ऑन द प्राइसेस। इसका मतलब क्या हुआ कि डेफिनेटली इम्पैक्ट तो आया हुआ है, बट ग्रॉस मार्जिन पे इम्पैक्ट आया हुआ है, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया। अगर आप एब्सोल्यूट प्रॉफिट देखते हो तो वो ओवर ईयर ऑन ईयर इंक्रीज ही हुआ है इन अ केस ऑफ राइजिंग रॉ मटेरियल सिनेरियो इन 13-14, और हमें ये लग रहा है कि ये सिनेरियो हम वापस देख रहे हैं 21-22 में, और डेफिनेटली हमारा अंदाजा है कि ग्रॉस मार्जिन विल हैज अ हायर कोरिलेशन विद क्रूड, बट ग्रॉस प्रॉफिट हैज अ लोअर कोरिलेशन। दैट मीन्स मार्जिन जो पहले समझो एज अ इंडस्ट्री 40% बना रहा था, वो हो सकता है कि 36% बनाए, 37% बनाए, बट जो ₹100 का प्रॉफिट अगर कंपनी पहले बनाती थी या इंडस्ट्री बनाती थी, वो ₹100 का प्रॉफिट आगे चल के 120 हो सकता है, 130 होगा। वही कहने का मतलब है कि अगर कोरिलेशन आप देखते हो तो मार्जिन पे ज्यादा है, प्रॉफिटेबिलिटी भी कम है। कौन सी कंपनी का क्रूड एंड क्रूड डेरिवेटिव्स पे सबसे ज्यादा डिपेंडेंसीज है? तो सबसे पहले है आरती, जिनके की रॉ मटेरियल्स है बेंजीन, टोलिन, नाइट्रिक एसिड एंड कॉस्टिक सोडा।
which are highly dependent on raw material derivative which are closer to crude. Similarly, Atul, Clean Science is basically a phenol and methanol based derivatives company manufacturer जिनका crude dependence medium है, which also links with PI जो crude derivatives की raw materials है. Navin Fluorines जहाँ crude पे एकदम low dependence है. Similarly, it goes for SRF. और जो अब विनती की बात करते हैं तो हाई है विच रॉ मटेरियल डेरिवेटिव्स आर क्लोजर टू क्रूड. तो सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट ग्रॉस मार्जिन पे आ सकता है वो है आरती, अतुल एंड विनती. ऑल दिस कंपनीज विल हैव अ हायर इम्पैक्ट ऑन ग्रॉस मार्जिन. हैविंग सेड दैट द इम्पैक्ट ऑन द ग्रॉस प्रॉफिट वुड बी लोअर बिकॉज द correlation which I'll probably explain in the next slide is high on gross margin and low on gross profit. अभी यहाँ पे हम लोग जो correlation with crude देख रहे हैं, जो आप आती की बात कर रहे हो, तो वहाँ ऑलमोस्ट ये पूरा हम लोग ने फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY13 में ऑलमोस्ट लास्ट 10 साल से हम लोग ने कोरिलेशन निकाला हुआ है. तो ग्रॉस मार्जिन पे अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली 60 बिप्स का इम्पैक्ट आता है और ग्रॉस प्रॉफिट पे ओनली 15 बिप्स. तो सिमिलरली अगर आप देखते हो तो ग्रॉस मार्जिन पे इम्पैक्ट काफी ज्यादा है बल्कि ग्रॉस प्रॉफिट पे कम है. और किसी किसी केस में ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ भी सकता है अगर उनका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट काफी अच्छा हो और इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन और रियलाइजेशन काफी अच्छा हो. तो हो सकता है कि यहाँ पे इम्पैक्ट जो 40% मार्जिन का हो सकता है कि आपका 37-38 चला जाए, बट यहाँ पे 100 रुपए का प्रॉफिट हो घट के ऑलमोस्ट हो सकता है कि 97-98 के पास आ जाए. ज्यादा इम्पैक्ट हमें यहाँ नहीं दिखता. क्यों? बिकॉज जो कंपनी हम कवर कर रहे हैं उनका ऑपरेटिंग स्केल हैज गॉन अप टू सच अ हाई लेवल and whatever the capacity expansion that they have incurred and they will be probably focusing on will drive the volumes for the next few years as companies not only who has invested but continue to focus on new R&D and invest for a long term opportunities. मतलब वो ना ही 1 साल 2 साल का व्यू देके देखते हैं बट हम देखते हैं कि आगे 5 साल 10 साल तक इनकी सस्टेनेबिलिटी कितनी है, डिमांड क्या है, वेदर ये दिस डिमांड विल सस्टेनेबल और यही सस्टेनेबिलिटी हमें अर्निंग्स में दिख रही है कि नहीं. वॉल्यूम्स तो बना लेते हो बट क्या ये वॉल्यूम्स डाउनस्ट्रीम और स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है? हम ये नहीं देखते कि ये कंपनी एक कमोडिटी कंपनी है. वी वांट टू फोकस ऑन द स्पेशलाइज्ड कमोडिटी. हमें ये नहीं चाहिए कि कंपनी खाली टोलून बनाएगी, हमें ये चाहिए कंपनी टोलून की डेरिवेटिव्स बनाती है. हमें ये चाहिए कि कंपनी खाली पॉलीमर्स नहीं, हाई प्लास्टिक पॉलीमर्स बना रही है, ना कि आप जैसे हमने आगे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखे अतुल के, हमने आरती के देखे, पीआई के देखे, एसआरएफ के देखे, विनती के देखे. वी डोंट वांट टू फोकस ऑन वन प्रोडक्ट कंपनी. हम फोकस करते हैं मल्टीपल प्रोडक्ट कंपनी वेयर द बेनिफिट और द कंपनीज आर इन अ पोजिशन टू पास ऑन द इंक्रीज इन द कॉस्ट नॉट ओनली इन अ क्रूड बट सेकेंड बिगेस्ट कॉस्ट इज पावर एंड फ्यूल. और अभी के हाल में आप देखोगे बिकॉज ऑफ अ क्रूड एंड द लैक ऑफ कंटेनर अवेलेबिलिटी फ्रेट कॉस्ट भी काफी हद तक बढ़ चुका है. तो ये सब कंपनी जो हम कवर करते हैं, दे आर इजीली एबल टू पास ऑन ऑल दिस increase in the cost because of a higher scale and growing dependency of a global customers on the Indian players because of a China plus one. Definitely China was a bigger player, but जो हिसाब से हमने लास्ट 2-2.5 साल में हमने जो टर्न देखा हुआ है, डिपेंडेंसी ऑफ द ग्लोबल प्लेयर्स ऑन द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैज इंक्रीज सब्सटेंशियली. इसीलिए हमारा एक्सपोर्ट जो पहले X% था अभी वो मल्टीपल होके ऑलमोस्ट 3x to 4x हो चुका है. और हमें लगता है कि ये एक्सपोर्ट विल कंटिन्यू टू ड्राइव द वॉल्यूम ग्रोथ. बिसाइड्स दिस ऑल दी कंपनीज जो अपनी R&D पे फोकस करती है, दोस हु आर ऑन दी R&D, जो हमें लगता है विल हेल्प द कंपनी टू फोकस ऑन द न्यू प्रोडक्ट्स और इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन एज वेल. सेकेंडली जो पावर एंड फ्यूल कॉस्ट है जिसकी भी कॉस्ट बढ़ गई क्योंकि हमने देखा भी कोल जो कोयला बोलते हैं वो कॉस्ट भी ऑलमोस्ट 2x 3x हो गया लास्ट 4 महीने में. तो सबसे ज्यादा पावर कॉस्ट किसका है? अतुल एंड एसआरएफ हैज द हाईएस्ट पावर एंड फ्यूल कॉस्ट जो यहाँ पे दिखाई देता है इन चार्ट जो हम लोग लास्ट 4 साल का ये चार्ट हम दिखा रहे हैं. वाइल विनती के भी है बट विनती जो अपना 50% ऑफ द पावर रिक्वायरमेंट जो कैप्टिव सोलार से कर रही है, तो इट्स वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट आफ्टर पीआई
in terms of power and fuel cost. So definitely, after raw materials, power and fuel is also one of the key things which every companies monitor. क्या कॉस्ट का क्या है, हम कैसे पास ऑन कर सकते हैं, और ये नॉर्मल कमोडिटीज में नहीं हो सकता, बिकॉज नॉर्मल कमोडिटीज आपका ग्लोबली ड्रिवेंड है, डिमांड सप्लाई मिसमैच अगर हुआ तो दैट यू आर एबल टू पास ऑन, बट अगर इंपोर्ट ज्यादा हुआ तो बल्क कमोडिटीज में आप नहीं कर सकते हो. बट इन केस ऑफ स्पेशलिटी केमिकल्स, यस यू कैन पास ऑन बिकॉज ऑफ योर डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स, और कहीं ना कहीं आपके फिक्स्ड कॉस्ट है, बिकॉज ऑफ द हायर स्केल ऑफ ऑपरेशन you are able to absorb the higher fixed cost and provide that competitiveness in the product, in the manufacturing cost to the end users, and compete with the global as well as the domestic players. तो रही बात अभी अपनी एक्सपोर्ट की, जो कंपनी जो हमने बात की, तो जो कंपनी हमारे कवरेज में जो हमने जो 7 कंपनीज की बात की जिनका एक्सपोजर टू रशिया एंड यूक्रेन इज वेरी लो, hence impact on export demand is negligible. तो लोग बोल रहे हैं कि लास्ट क्वार्टर में हमने काफी हद तक लोगों से मुंह से सुना है कि रशिया यूक्रेन हो गया, केमिकल्स कंपनी नहीं चलेगी, इनको वॉल्यूम पे इम्पैक्ट आएगा. बट अगर आप हमारी कंपनी देखते हैं जो हम कवर करते हैं, आरती, अतुल, क्लीन साइंस, एनएफआईएल, पीआई, एसआरएफ, विनती, अगर आप एक्सपोर्ट प्रपोर्शन देखते हो तो करीबन करीब सभी कंपनी का 40% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है. अगर आप रशिया से देखते हो तो एक्सपोजर टू रशिया एंड यूक्रेन इज वेरी लो. जो सब, अगर आप यूरोप से बात करते हो, हाँ यूरोप में एक्सपोजर है, जैसे आरती का 12% है, अतुल हैज 5% एक्सपोजर, क्लीन हैज 8%. सबसे ज्यादा जो एक्सपोजर है वो नवीन फ्लोरिन है, विच इज 30-35%. पीआई 7% है, विनती 15-20% है. सो हमें नहीं लगता, बिकॉज गिवन द लो एक्सपोजर टू रशिया एंड यूक्रेन, लास्ट क्वार्टर्स के वॉल्यूम में हमें कोई गिरावट नहीं दिख रही है, और बल्कि हमें गिरावट नहीं दिख रही है जो कंपनी ने, बिकॉज ऑफ देयर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट दे वर एबल टू पास ऑन द हायर रियलाइजेशन. उसके चलते हमें लगता है कि वी बिलीव दैट द रेवेन्यू ग्रोथ फॉर स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी अंडर आवर कवरेज फॉर Q4 वुड बी हायर. मैं बताऊंगा कि Q4 का एक्सपेक्टेशन क्या है और आगे चल के हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. लो तो मतलब एक्सपोर्ट पे वॉल्यूम कम है, डिमांड पे इम्पैक्ट कम है. इसके अलावा INR भी डेप्रिशिएट हुआ है वर्सेस RMB, which has improved the competitiveness for all the chemical exporters in the India. तो हमारा ये व्यू है that companies having presence in sectors like agrochemicals and pharmaceuticals, and those who are present more in the downstream product will see a lower impact on demand, which means आरती जिनका एंड सेक्टर्स है एग्रोकेमिकल, फार्मा, पॉलीमर्स, दे आर इजीली एबल टू पास ऑन द रॉ मटेरियल कॉस्ट, बिकॉज स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स अकाउंट फॉर 70% एंड आर द प्रोडक्ट्स गोइंग इनटू नॉन डिस्क्रिशनरी सेगमेंट्स कैन बी पास्ड ऑन क्विकली. मतलब आरती में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखती है कि कंपनी अपने कॉस्ट को एंड यूजर्स को पास ऑन क्यों नहीं कर सके. तो डेफिनेटली कंपनी विल बी एबल टू पास ऑन. सिमिलरली अतुल may see a delayed in price transfer because of a bulk chemical. जहां जहां पे कंपनीज अगर बल्क केमिकल्स में प्रेजेंस है, हमें लगता है कि वहां पे उन सभी कंपनीज को काफी हद तक प्रॉब्लम होगी टू रॉ मटेरियल कॉस्ट प्राइस ऑन करने के लिए. दैट्स व्हाई हम वहां पे देख सकते हैं कि कहां पे 3 महीने का डिले हो सकता है, 1 महीने का डिले हो सकता है. इसीलिए अतुल में सी अ डिले इन प्राइस ट्रांसफर. Clean science, definitely margins may continue to remain under pressures in the near term because for them, though the dependency is medium, but because of the bulk commodities, they will also see a delayed price transfer. That PI में cost are passed on a quarterly basis, so definitely 3 महीने का हमें कहीं ना कहीं impact आ सकता है. जैसे NFIL में है, SRF में विनती है. अभी विनती में अगर आप ब्यूटाइल फिनॉल्स, IBB ये 3 प्रोडक्ट आप देखोगे तो मैं उसमें प्रोडक्ट में कंपनी को हिट लेनी पड़ेगी. बट अगर जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट उनका है ATBS इज लाइकली टू बी फास्टर इन अ पॉजिटिव डिमांड, क्योंकि डिमांड सप्लाई मिसमैच है, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो वहाँ कंपनी इजीली पास ऑन कर सकती है. बट अगर मैं बोलता हूँ कि कंपनीज हैविंग प्रेजेंस इन सेक्टर लाइक एग्रोकेमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स will see a lower impact on demand. तो कहीं ना कहीं हमारे
दिमाग में अगर ये ख्याल आता है कि व्हाई डोंट वी लुक एट अदर देन स्पेशलिटी, वी लुक एट एग्रोकेमिकल्स। एग्रोकेमिकल्स में हमें ग्रोथ दिखेगी क्या, नहीं दिखेगी? अगर स्पेशलिटी केमिकल्स ग्रो कर सकती है तो एग्रोकेमिकल्स कंपनी क्यों नहीं, व्हाई नॉट? हमें लगता है कि जो कंपनीज का जो एग्रोकेमिकल्स का एक्सपोजर है, जो डायरेक्ट है, जो फर्टिलाइजर, वहां पे वैल्यूएशन काफी हद तक फैक्टर इन करते हैं। तो ऑल द पॉजिटिव जो हमने जो अभी लास्ट 15-20 मिनट हम लोगों ने जो डिस्कस कर रहे हैं, वो काफी हद तक इज बैक्ड इन, इट्स ऑलरेडी बीन फैक्टर इन द वैल्यूएशन। Current cycle will benefit exporters because of the cost competitiveness and the contract manufacturers. But and that will also drive कि market में हम healthy pricing led growth देख रहे हैं in CY22 because of the crop prices. But अब agro players में आप देखोगे कि margin pressure due to a increase in raw material cost and pressures on farmer profitability is going to take a hit. Because domestic agri input will have a limited availability to pass through the higher raw material cost, and farmers' profitability is likely to decline by almost 12 to 15% at least because of an increase in diesel and fertilizer prices. So that's why we believe that's a limited play to benefit from the positive global agri cycle because of the valuation. The biggest company that can have a benefit या जिसको फायदा हो सकता है वो पीआई इंडस्ट्रीज एंड यूपीएल है, विच आर मोस्ट लाइकली नियर टर्म बेनिफिशियरी एंड एक्सपेक्टेड टू सी अ हायर वॉल्यूम। बट अगर मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखूं तो बहुत दिस कंपनीज डिपेंड ऑन यूपीएल, जहां पे हमको डेट जो उनकी बोरोइंग्स है काफी ज्यादा है। तो जब तक वो कम नहीं होगी हमें उन पे री रेटिंग का मुआवना करना बहुत मुश्किल है। और पीआई में नॉन एग्री केमिकल डाइवर्सिफिकेशन डेफिनेटली इज अ की थिंग्स टू वॉच आउट फॉर। हमने देखा पास में पीआई has taken certain steps in terms to move to a pharma API thing, but things have not turned out. So any possible way or the future way that if PI moves to non-agri chemical diversification will be the key things to watch out for, and that can be a big turning point for PI industry, जो हमें फिलहाल के लिए नहीं दिख रहा है at this point of time. That's why we believe that जो हमारे कवरेज में जो फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर केमिकल्स है उनका valuations are at expensive, and we focus more on chemicals despite the growth in the global agriculture cycle. तो अभी हम सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि Q4 में हम ये सेक्टर से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहां मैंने बताया कि all the companies in the specialty chemicals have invested a big amount to create a capacity. So डेफिनेटली वॉल्यूम्स बढ़ेगा। एक्सपोर्ट पे हमने नेग्लिजिबल इम्पैक्ट देखा है, तो एक्सपोर्ट वॉल्यूम भी काफी हद तक हाई रहेंगे, और ऑल द रेवेन्यूज ऑफ ऑल दिस कंपनी विल इंप्रूव सिक्वेंशियली एज वेल एज ईयर ऑन ईयर बिकॉज ऑफ अ हायर रियलाइजेशन एंड वॉल्यूम ग्रोथ। जो रियलाइजेशन बढ़ा है बिकॉज ऑफ द डिमांड सप्लाई मिसमैच एज वेल एज ऑन द पास ऑन ऑफ द रॉ मटेरियल प्राइसेस। जैसे मैंने बताया क्रूड का लिंक ऑन द ग्रॉस मार्जिन इज हायर, दैट्स व्हाई वी विल सी a decline in the gross margin, but expect absolute EBITDA, मतलब जो profitability है, operating performance is expected to grow in an absolute number. Definitely divergence दिखेंगे depending whether the company is able to pass on or not. जैसे across the players like PI, SRF, Vinati to report growth, whereas Aarti, Atul will see a decline because Atul को जैसे मैंने बोला will take a delayed price transfer. Similarly, fertilizers and agrochem space में जो मैंने बताया, they are non-eventful given the low exposure to rabi crop to overall revenue. और ना ही हमें भले वॉल्यूम ग्रोथ दिख रही है, but because of the valuation we are not comfortable, and because agrochemicals companies are unable to pass on the higher raw material prices, we witness a margin pressure despite the price increase. So दिस इज द एक्सपेक्टेशन। और अगर हम नंबर की बात करें तो अगर आप ये देखो कि एबिटा पे ईयर ऑन ईयर में डेफिनेटली जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस की जो हम बात कर रहे थे, ये मार्जिन्स में तो हमें गिरावट दिखेगी, बट अगर हम ईयर ऑन ईयर बात करते हैं तो एबिटा पे हमें आरती में 16% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ है, क्लीन साइंस में ऑलमोस्ट 10%, नवीन फ्लोरिन 18%, पीआई इंडस्ट्री 32%। तो ये स्पेशलिटी केमिकल्स और फर्टिलाइजर एग्रोकेमिकल्स की ग्रोथ है। अगर फर्टिलाइजर्स की आप बात करते हो जो यहाँ पे दिखते हैं बेयर से लेके यूपीएल तक, जहां तक मोटा मोटी बेयर्स विल सी 13% डिक्लाइन,
Dhanuka Agri will take 4.2%, Rallis will see 1.7% decline. और वही हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं तो डेफिनेटली अदर देन आरती, पीआई, Godrej Agrovet and Rallis, all other companies will see a sequential improvement in PAT despite increase in overall raw material cost. Now this is largely driven by a higher operating scale. The companies have invested, so कहीं ना कहीं हमें जैसे आरती ने काफी हद तक इन्वेस्ट किया तो कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि आरती में डेप्रिसिएशन ज्यादा रहेगा, इसलिए आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बढ़ोतरी दिख रही है, तो क्यू ऑन क्यू में नहीं है। आरती इंडस्ट्री में यह है कि उनको लास्ट फीस टर्मिनेशन फीस मिली थी एक आध कॉन्ट्रैक्ट की, जो ये क्वार्टर में मिसिंग है, दैट्स व्हाई वी आर सीइंग अ 25% डिक्लाइन। वैसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई रीजन है कि सिक्वेंशियली डिक्लाइन हमें दिख रही है, बट ओवरऑल वी आर क्वाइट कंफर्टेबल इन दी स्पेशलिटी केमिकल स्पेस as compared to the bulk chemicals or the fertilizer and agrochemicals despite the higher valuation. फिर हमें एक क्वेश्चन आता है कि इतनी सारी केमिकल्स कंपनी है तो कौन सी केमिकल्स हमें लेनी चाहिए। सो एज अ हाउस we are bullish and the preferred bet is Aarti, SRF and Vinati. All three companies will continue to trade at a premium and all the chemicals companies जो हमने देखी थी जो लास्ट 3 साल 4 साल पहले 25 टाइम्स चल रही थी, उनका मल्टीपल री रेट हो गए 45 टाइम्स 55 टाइम्स हो गया, और हमें लगता है कि ये मल्टीपल्स आगे चल के और चलेगा एंड दैट विल कंटिन्यू टू ट्रेड प्रीमियम वर्सेस अदर केमिकल्स। तो आरती पे हमारा टारगेट प्राइस 1000 रुपया है जो हमारा प्रिफर्ड पिक है, एसआरएफ पे 2300 रुपया, विनती पे है 1950। अगर एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अगर मार्केट करेक्ट होता है और हमें स्टॉक के नीचे के लेवल पे मिलते हैं तो डेफिनेटली ऑल दिस थ्री विल बी आवर प्रिफर्ड बैट ऑन द स्पेस गिवन देयर वैल्यूएशन मल्टीपल। अगर आप FY24 के मल्टीपल के हिसाब से देखोगे तो स्पेशलिटी केमिकल्स एज अ सेक्टर जो हम कवर करते हैं 37 टाइम्स FY24 के मल्टीपल पी पे मिल रहा है, और हम आरती की देख रहे हैं तो 30 टाइम्स विच इज डिस्काउंट, विनती 43 टाइम्स भले हम for 32 times and SRF 34 times which is also discount, but ये तीन कंपनी हमने इसीलिए चूज की because all these companies have presence in the value-added product, they are doing an expansion and they are those one who are able to pass on the prices to the end users and will be able to grow their absolute profit, and यहाँ पे हमें earnings की sustainability आने वाले 7 से 8 साल तक हमें काफी दिख रही है। So preferred pick अगर स्पेशलिटी केमिकल्स में हमें कोई पूछे तो है आरती, एसआरएफ एंड विनती। So that's all on the chemical space. We are happy to take a question and answer. मैं इन्वेस्टर्स या क्लाइंट्स को पूछना चाहता हूँ कि in case if you have any other questions other than chemicals, please feel free to ask, because with me I'm been joined with my entire fundamental research team who are happy to take the questions across the sector. Thank you. Over to Rini. Thank you, Jatin. That was a very interesting and insightful presentation on chemical sector. So dear viewers, as Jatin said, we will now open the floor for Q&A, and we have our entire research team here. They will try and address as many queries as possible. So I request you all to drop your queries in the comment section below. Starting with the first question, which is for Sumit sir. Can you please share your view on TCS post its result yesterday? So if we look at the results, overall we believe the good show of the company continues. We are highly impressed with the revenue growth and the strong deal wins. So these are the important key takeaways from the result. When I'm saying strong deal wins, if you see the total contract value of deals has increased by 23% year on year and stood at 1,130 crores US dollars. That is significantly higher than what company has reported up till now. So one of the best total contract value of deals. What does that mean? It basically means कि company के पास इतने contracts already in hand है, इसको वो execute करेगी over a period of time, तो उसको continuously revenue आता रहेगा। तो revenue visibility हमको सामने दिख रही है, इतने orders हाथ में आ गए, plus every quarter company will keep adding more and more
contracts or deals to this existing contract value. अगर हम इसमें डीप डाइव करें और देखें तो डील विन जो इंक्लूडेड 2 मेगा डील्स ऑफ 100 crore each is included, which will add cumulatively around 180 crore US dollars. This is quite big because mega deals मिलना से क्या होता है, कंपनी को और इंटरनल और बिजनेस मिलते रहेंगे जिससे वो कोर डील कर रही है, प्लस अदर डील्स विल कीप डूइंग. Just to summarize, deal tenures are in the range of 7 to 10 years, implying cumulative average annual contract value of 20 crore US dollars over the deal tenure. ये हमको अगले 7 से 10 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी मिल रही है यहाँ से. कंपनी ने बताया कि दे आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट रोबस्ट ग्रोथ इन यूरोप, जो इन्वेस्टर्स का एक बहुत बड़ा कंसर्न था कि ड्यू टू रशिया यूक्रेन इशू यूरोप विल गेट इम्पैक्टेड और वहां से आईटी को हिट आएगा. बट कंपनी ने बताया कि टीसीएस ने बताया कि 23 में नेक्स्ट ईयर मतलब करंट ईयर में दे विल सी रोबस्ट ग्रोथ इन यूरोप. तो ये एक बड़ा इन्वेस्टर का कंसर्न सबसाइड करता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंपनी ने इस क्वार्टर के अंदर मोर देन 35,000 एम्प्लॉइज ऐड करे हैं. व्हाट डज दैट मीन? उतनी ऑर्डर की विजिबिलिटी है, उतना रेवेन्यू विजिबिलिटी है, उतनी डिमांड आ रही है, तभी कंपनी ने इतने एम्प्लॉइज एक क्वार्टर में और ऐड कर लिए. तो इससे जो अट्रिशन का कंसर्न है फॉर ऑल द इंडस्ट्री प्लेयर्स, वो उसमें टीसीएस इज डूइंग फिनोमिनली बेटर देन अदर्स. तो ये सब कंसिडर करते हमको लगता है रिजल्ट्स आर एक्सट्रीमली गुड सो फार. ग्रोथ, फ्यूचर ग्रोथ पॉसिबिलिटीज आर देयर. Thank you, Sumit. Next, few questions are for Jatin on chemical sector. So, Jatin, first question is, what is your view on Lakshmi Organics and Thirumalai? So, लक्ष्मी ऑर्गेनिक एंड थिरुमलाई दोनों कंपनी हम कवर नहीं करते हैं, बट अगर आप इफ यू लुक फ्रॉम दी ओवरऑल बिजनेस पर्सपेक्टिव, लास्ट 3-4 महीने में हमने काफी हद तक एसिटिक एसिड के प्राइसेस में काफी अच्छी बढ़ोतरी देखी है, विच इज क्वाइट बेनिफिशियल फॉर लक्ष्मी ऑर्गेनिक. तो डेफिनेटली बिकॉज ऑफ दैट उनका वॉल्यूम भी काफी अच्छा हुआ है लास्ट क्वार्टर में, एंड दैट विल प्रॉब्ली हेल्प द कंपनी टू ड्राइव अ बेटर अर्निंग. बट कि अब थिरुमलाई की बात करें जो थैलिक एनहाइड्राइड और मैलिक एनहाइड्राइड में है, वहाँ पे स्ट्रेच इम्प्रूव हुआ है बिकॉज ऑफ डिमांड सप्लाई मिसमैच. अब अगर आप खाली मार्च महीने की बात कर रहे हो तो ऑलमोस्ट थैलिक एनहाइड्राइड 15% प्राइस इम्प्रूव हुए थे. मैलिक एनहाइड्राइड में ऑलमोस्ट 21% की प्राइस की हमने बढ़ोतरी देखी है. So definitely all these things are somewhere likely to play a major role for these bulk commodities. Like for Lakshmi, acetics is the one thing that we can look at it. For Thirumalai, definitely their Malaysian subsidiaries has also started performing well, which was a drag for the last few quarters. So any improvement in operating performance in Thirumalai from Malaysian subsidiaries because the malic anhydride will be the key. The Thirumalai will be the key beneficiary, and they are probably in domestic. If you look, the only competitors they have is an IGPL. So definitely we don't have a view, but looking at the recent trend in terms of pricing and the spreads, we think that the next 1 or 2 quarters will be good for both Lakshmi as well as Thirumalai Chemicals. Jatin, can you also share your views on Tata Chemicals? So yes, so टाटा केमिकल्स पे हमारा जो व्यू है डेफिनेटली वो थोड़ा नेगेटिव व्यू है, बिकॉज वी हैव अ सेल रेटिंग ऑन टाटा केमिकल्स विद द टारगेट प्राइस ऑफ 785. बिकॉज अगर आप देखोगे कि अगर लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स दे हैव बीन मल्टीपल मिस बिकॉज ऑफ द मार्जिन, एंड जो सोडा एस आउटलुक हैज इम्प्रूव सब्सटेंशियली. हमें लगता है कि उनकी जो लोअर प्रॉफिटेबिलिटी इन यूएस बिजनेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द कॉस्ट प्राइसेस विल प्रॉब्ली will take a toll on the earnings. हाँ, अगर आप नियर टर्म की बात कर रहे हो तो डोमेस्टिक बिजनेस विल डू गुड बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द सोडा एज प्राइसेस. अगर हम इंडस्ट्री चेक की बात कर रहे हैं जो हम लोग ने रिपोर्ट निकाली थी लास्ट मंथ में, तो एज पर इंडस्ट्री चेक जो सोडा एज मैन्युफैक्चरर्स दे मेक एन एबिटा पर टन ऑफ नियर अबाउट 11 to in the
range of 11 to 13,000 rupees at the current level. But if you look on the historically, they have never made a EBITDA per ton industry to the abouts of 6,000, 7,000. So अगर हम इसमें conservative basis भी लेते तो definitely 8,000, 9,000, 8,000 to 9,000 rupees की EBITDA per ton की possibility domestic soda ash manufacturers के लिए है, which is quite good, and that is quite augurs well for Tata Chemicals also. Having said that, the low profitability US business because of the increase in the input cost will continue to impact the margin. So as a result, we have a sell rating on Tata Chemicals with a fair value of 785. Thank you, Jatin. Next question is for Shrikant sir. Sir, our participant is asking your views on defense sector and why it has never been recommended by the experts. If you could also give defense sector stock. Yeah, sure. I think, see, the problem with the defense sector was the same. There were like very few companies listed on the exchange in the past. Now there are few companies which are there, like Hindustan Aeronautics or maybe Bharat Dynamics. The problem is that the flows and the overall, the way the government controls the entire sector, it is very difficult to analyze the sector. But now the management is like more and more vocal. They are like now communicating with the firms. They are talking to the, I can say, investors and all. And yes, now overall the future possibilities or maybe the prospects that always we try to analyze, all these things are now there. So yes, in the near future, definitely we are going to analyze the sector. It's not that we are not tracking, but the thing is what the flows were not that clear as in current times. So we are of the view that if we start getting flows specifically from the companies, and if we can like talk something or if we can write something on the sector, if there is like specifically specific concentration from the government on the sector, then we can like do something on it. सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अभी अगर आप देखें तो यहाँ से आने वाला जो वक्त रहेगा, जो पीरियड रहेगा, इसमें हमें लगता है कि इन सेक्टर्स में बिकॉज ऑफ दिस मेक इन इंडिया और इन सब का इम्पैक्ट आते जा रहा है और रियल ग्रोथ देखने मिलेगा. और इसी वजह से लगता है कि आने वाले दिनों में, जैसे हम लोगों ने केमिकल सेक्टर्स को वैसे देखा जाए तो काफी लेट कवर किया है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि यहाँ पे स्केलेबिलिटी है. सिमिलरली हमें लगता है कि डिफेंस सेक्टर में भी यहाँ से अच्छी खासी स्केलेबिलिटी है, विजिबिलिटी है, और आने वाले दिनों में हमें लगता है कि बिल्कुल इसे कवर करना चाहिए. इसमें सबसे बड़ी रिस्क यही है कि इसमें कभी भी ओएफएस आ सकता है, और कभी अगर कुछ प्राइस करेक्शन अगर आ जाए तो उसे मैनेज करते आना चाहिए इन्वेस्टर्स को. और इसी वजह से हम पीएसयू स्टॉक्स पे जो हमारा फोकस होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू प्राइवेट कंपनीज. Thank you, Shrikant sir. Next question is from the banking space for Hemali. Hemali, can you share your view on HDFC and HDFC Bank? As we mentioned before as well, we like HDFC Bank in the medium term. This merger will help the bank in its pricing power, in its ability. Jatin, what is your view on metal sector? Already run up too much. So whether to be in the sector or not to be in the sector, that's a question. So we believe, yes, the sector still offers, or a particular, definitely the selected stocks in a sector still offers a long-term view. They say, the best pick in the sector, if you look on the fairest space, is JSPL. At every dip, we expect tell the clients we can buy the stocks, because agar aap dekhoge, they will be the first big company to get net debt free. And the long product prices increase have been much higher than the flat product prices. Or जो recently उनको 4 coal mines that they have bid in the auction, that will probably add a fair value by almost 104 rupees per share. So overall, everything looks good for Jindal Steel and Power with a longer term horizon with a target price of 700. Just want to highlight one point, that whatever the target price that we are seeing on this presentation, the target price is for a period of next 12 months. And अगर आप long term history देखते हैं, तो definitely we can see that ferrous like JSPL and Tata Steel can offer a good bet for a longer term horizon. अगर हम non ferrous की बात कर रहे हैं, तो definitely one phase that we need to look at is Hindalco for our next 4 to 5 years, where we see a consistent growth. And the company has done a good capex, and they are investing another 8 billion over the next
3 to 4 years, probably that will also help the company to gain the market share and focus more into a downstream product. So for next 4 to 5 years, yes, we are positive on the space, whereas on the ferrous, JS Steel and Tata Steel and non-ferrous would be a Hindalco, would be the preferred buy. Thank you, Jatin. Next question is from Auto Space for Arun sir. Please share your views on Tata Motors. Tata Motors, we are broadly positive on the stock. Overall, if you look at the last 6 months, we have seen markets moving in a range-bound fashion. And Tata Motors too have moved broadly accordingly, though the volatility in the stock is higher. The stock gives us good opportunities to enter. Even during this Russian-Ukraine conflict, we saw the stock going down and the stock has rebounded these levels from the CMP. The stock can be accumulated on declines or added on declines. The company is doing well in the passenger vehicle space. They have gained market share. We believe that should continue going ahead this year. Commercial vehicle segment is another place where we are expecting good growth over the next 2 years, and Tata Motors is a market leader there, so they should be benefiting there. In JLR, we are seeing sequential improvement. So this fourth quarter, we are expecting improvement to happen over third quarter because chip shortage situation is gradually improving. Though it's not completely yet out of the woods with respect to chip shortages, but we are expecting gradual improvement going through FY23. So overall, we believe the performance for the company should improve going ahead as well, and we remain broadly positive. We have a fair value of 470 rupees on the stock. Thank you, Arun. Next question is from IT Space. Please share your views on Tech Mahindra and Wipro. Sumit sir, can you please take this one? See, so far Tech Mahindra is concerned, we are bullish on Tech Mahindra. We believe that the stock has got a lot of potential, considering the 5G rollout will throw multiple opportunities for Tech Mahindra, and they have the strong capabilities in that space. We believe the fair value of the stock is 1,800 rupees. So from current price, the upside is quite reasonable, almost 24-25%. So we like Tech Mahindra. We are recommending buy on the stock. So far Wipro is concerned, if you see, there is a change in the management and a lot of organic initiatives they are taking. So we will wait for some more improvement to be seen on the inorganic side. So as a result, we believe that right now the current market price captures most of the positives, and we do not see any meaningful upside from current price. So we are recommending reduce on the stock on Wipro. Thanks, Sumit. Next question is for Shrikant sir. So what is your view on Nifty for the next month or two, with US economy likely going into recession and global markets pricing in the recession? Is Nifty going back to 15,700? Yeah, sure. I think, see, the Nifty is more or less discounting number of all these inflationary things, because the top lot more we have already discussed about the inflation, I'm going to say, on the street. People have multiple calculations and projections. So they are like ready. This time the street is ready to absorb the whatever the outcome which will come in the next credit policy from the US government or from the US Fed. But broader view is that I think the market is discounting to all these things. It is going to remain in a range. I'm not expecting market to fall back to the levels of 15,600 again. Yes, we may see the levels of 17,000 or 16,800, where the market has spent maximum time in last almost 6 months. On the higher side, 18,500, 18,600 is going to act as major resistance. Dollar index is already quoting at 100, 101 sort of levels. Maximum we are expecting 102, 103 in next maybe few weeks of time, because it has broken the psychological mark of 100. So we may see the levels of 103. In that case, the market may fall to the levels of 17,000. But broadly, we are of the view that number of our corporates, companies, they are like really doing well, and they are going to do well. Our government is taking precautionary measures, and our even RBI government, I mean to say government, is also supporting to the overall system. So we are of the view that if there is any correction, we should look for adding some positions.
On immediate basis, 17,400, 17,200 going to act as very good support. In the crisis time, we may see the levels of either 17,000, but on the high side, we are expecting market to rebound to the levels of again 18,000, 18,200, and the entire period is going to remain more and more stock specific. Thank you, Shrikant sir. The next question is for Purvi. Purvi, can we invest in pharma stocks with a view of next 1 year? Thank you, Rini. Good evening. Yes, we can invest pharma stocks with a view over next 1 year. I would suggest that we remain stock specific. And specifically, I would like to reiterate again that Cipla would be a really nice bet at current levels again, or if there is a correction on this levels, it could be another opportunity to buy in, because it has couple of inhalers approval lined up in the upcoming quarter. So if those approvals or any positive news on that comes in, then it could move the stock to the next level. Apart from this, in the hospital space, Aster and Apollo are two of the stocks that we like, and we've been pushing it for the past couple of sessions as well. So that's also basically on account of that the Indian hospitals segment itself is doing well. And apart from that, we expect that the patient pool from overseas is also likely to pick up gradually in the upcoming quarter. So these are the couple of stocks that we would like to suggest the investors to have a look on. Thank you. Thank you, Purvi. Guys, due to time constraint, we will take only a couple questions more. Next question is for Pankaj sir. Pankaj sir, can you please share your views on Sumitomo Chemicals? So Sumitomo Chemicals, we are positive. We have buy recommendation and we have target price of 485 rupees. So this stock is little different from other agrochemical space, the players in the agrochemical space, because here in Sumitomo there is a strong parentage from the Japanese MNC, and if you see, they are going to give businesses to the Indian entity, and they are like going to launch 5 new products so they will be sourcing those from India. And globally, Sumitomo Chemicals is quite strong, so that parentage will help Sumitomo India to grow. Even if you look at the last quarter results, they have done well in the domestic market despite raw material price headwinds. Though they have taken some price hikes as well, and the mix was also in favor. And the company is also expected to benefit from the demand from Latin America, because the parent has acquired the South American business of Newform, and which was earlier sourcing their requirement from China. So that will also steadily shift towards India now. So in that way, Sumitomo Chemicals is going to be a beneficiary, and it is a quite strong play on the domestic as well as on the international agrochemical play. So we have a buy recommendation on the stock with a target price of 455. Thank you, Pankaj. We'll take one last question, which is for Amit sir. Amit sir, which one will you prefer, Bata or ITC for investment? Yeah, thank you, Rini. See, both companies are not comparable. One is in the discretionary space and one is in the staple space. Both companies are good in their own area, and both companies are doing well in the last few quarters. And if you see the performance of ITC for the last few quarters, they have been showing stable performance in the cigarette business. FMCG business has been doing well. Last 2 quarters, hotel industry has picked up. Paper board is also doing well. And company has recently spoken about restructuring the entire business, demerging some of the loss-making entities, and also they are looking forward to list their IT subsidiary. So all in all, company has been responding well to investors' concerns and showing strong financial performance. Currently, we have a buy rating on the stock with a target price of 282 on ITC. It's very close to our target price, and we are expecting an upgrade on the stock post Q4 FY22 numbers. In case of Bata is also doing very well in the discretionary space. With opening of schools and offices, we expect the sale of footwear to improve going forward, volumes to improve for Bata.
and we have a buy rating on the stock with a target price of 2380. So we like both the stocks and we have a buy rating on both the stocks. Thank you, Amit sir. We end the Q&A session now. Shrikant sir, would you like to give some closing comments? Yeah, I think we cannot end the session without discussing about the Bank Nifty, because Bank Nifty is something where traders have a lot of interest. Also, number of financial stocks are really doing well. अगर आप देखें तो broader space में अच्छी तेजी बनी है. एक्सिस बैंक लीजिए, आईसीआईसीआई बैंक लीजिए, या तो एचडीएफसी बैंक जिसमें भी एक अच्छा ट्रिगर आया था, इवेंट आया था, और बंधन बैंक ले लीजिए, सभी में अच्छा एक परफॉर्मेंस बना है. पीएसयू बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, इन दोनों में एक अच्छा बाइंग अट्रैक्शन बना है. और इसी वजह से इस बार जब मार्केट करेक्ट हो रहा था तो बैंक निफ्टी में एक जो फॉल था वो काफी ग्रेजुअल था, और इसी वजह से हमें लगता है कि जो बैंक निफ्टी है शायद मार्केट के साथ अगर एक वीकनेस अगर दिखाती है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी. हमें लग रहा था कि 37,200 और 37,000 ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स रहेंगे बैंक निफ्टी के लिए. Today we saw the levels of almost 37,200. From there, all the way it recovered back to the levels of 37,900, despite the market was weak. So one thing is very clear, that there is huge amount of buying interest in number of financial stocks. Like Axis Bank is having decent upside, HDFC Bank, including ICICI Bank. So broadly, we are of the view that we should be buyer if there is any correction in Bank Nifty with a view of next at least 2 to 3 weeks. In fact, we may also look for adding some out of money call options for the Bank Nifty. And अगर broader range की बात करें तो मुझे लगता है 37,000 के बाद ऊपर में एक बार हम आने वाले दिनों में शायद 39,500 के लेवल्स देख सकते हैं. और ये मंथ के एंड में बैंक्स जितने भी है उनके क्वार्टरली नंबर्स आने की शुरुआत होती है, और इसी वजह से हमें लगता है कि जो ये मंथ एंड है या तो बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट मंथ है, वहां पे हमें लगता है कि अच्छा खासा एक बाइंग अट्रैक्शन बैंक निफ्टी में देखने में मिलेगा. और आने वाले दिनों में अगर कोई भी करेक्शन अगर आता है तो बैंक निफ्टी को लॉन्ग करके चले. इसके अलावा हमें लगता है कि मार्केट्स में जो इवेंट्स है वो काफी अनप्रेडिक्टेबल है, अनसर्टन है, काफी सारी चीजें हो रही है इस मार्केट में, लेकिन आप उन इवेंट्स को एज अ अपॉर्चुनिटी कंसिडर करके कीप एडिंग गुड कंपनीज. वी ऑलवेज ट्राइज टू गिव यू गुड कंपनीज वेयर द अपसाइड इज डिसेंट, जहाँ पे मल्टीपल्स है, जहाँ पे स्केलेबिलिटी है, जैसे आज हमने एसआरएफ की बात की है या तो आरती इंडस्ट्रीज की बात की है, और सुमित ने जैसे टीसीएस के बारे में कहा था, बाटा के बारे में हमने डिस्कस किया है, फार्मास्यूटिकल्स में हम कुछ एक स्टॉक्स बार बार रिपीट कर रहे हैं, लेकिन लॉजिक यही है कि इन सब स्टॉक्स में हमें तेजी देखने मिलेगी और आप इन सब स्टॉक्स को एवरी डिक्लाइन खरीदते रहें. थैंक यू. Thank you, Shrikant sir. So, dear viewers, hope you found our webinar useful. If you are curious for more research updates like these, do check out Kotak Securities Telegram, Twitter, and Instagram channels. Thank you for joining us today. Have a great evening ahead. Thank you. you. Thank you. Thank you.